Hello, all the students. Welcome to Icon Careers. And today we are going to once again prepare all the students for CUET and PAT and GPMAT. So once again, we are going to take a practice session where we are going to discuss very important, relevant questions. And students, when we talk about CUET, especially today, it becomes the very first day. I know that जिन बच्चों के एग्जाम्स आज हैं, possibly they may think like कि sir, सारे experiments हमारे ही साथ क्यों होते हैं? But students do understand the best part happens to be at least you people will not have any kind of bias. Do understand जब पेपर्स पहले से हो जाता है तो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स आपको बताएंगे पेपर ऐसा था वैसा था मैंने इतने अटेम्प्ट्स किए एंड पेपर वाज इजी या इसके क्वेश्चन ज़्यादा थे तो पॉसिबली बिकॉज ऑफ दैट कई बार हम लोग प्रिजुडिस्ड हो जाते हैं हियर इज वेयर वी आर नॉट एबल टू गिव अ 100% परफॉर्मेंस तो बिलीव मी स्टूडेंट्स जिन बच्चों के एग्जाम्स बाद में भी हैं CUET के even if you people go through the complete review of how the papers are coming but still be ready for any kind of surprise as well. तो ऐसा मत मान के चलना कि जो कल का पेपर था या जो 11th का पेपर है सेम पेपर 12 का होगा. So some minor changes can be very much possible and that is the reason without any bias you people have to take the test and students review तो go through करना ही है but at the same time Icon Careers application पर on Icon Careers website पर there are so many tests which are available. So you people can go to www.iconcareers.com and जितने भी Icon के students हैं, you people have already got the login, ITN password या फिर जो मोबाइल नंबर है आपका उसको यूज करके OTP के through you people can register. If you are having any problem, do let us know. And there are so many tests which are available which are based on domain subjects also, general aptitude test also, and English also. And जिन बच्चों ने जिपमैट का फॉर्म नहीं भरा है, anyway students कल लास्ट डेट थी and जिपमैट 7th जून को है तो दैट ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम CUET के बाद पूरी तरह से हमको लगना है जिपमैट पर. चलिए अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव CUET. ओके जस्ट 1 सेकेंड. इज एवरीथिंग ओके? तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं वो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें. यस डन. मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बाद में एज अ वीडियो देखेंगे बिकॉज वीडियो में यू पीपल हैव अ चॉइस कि हम लोग अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. Yes, 1.5x, 2x, whatever. But anyway, students, if it is possible, join live because मेरे साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसका एडवांटेज बहुत मिलेगा. And now students, मैं one by one CUET में जिपमैट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है match the following. The questions based on phrasal verbs, questions based on vocab, questions based on idioms and phrases. Many times they appear in the form of match the following. The students सबसे पहले 10 questions we people are going to solve on the basis of match the following और इसके बाद we are going to take some general questions based on vocab and grammar both. तो आज vocab पर भी फोकस होगा और साथ में ग्रामर एंड पॉसिबली हर वो चीज पर फोकस होगा जिस पर क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं. चलिए तो स्टूडेंट्स हियर वी टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. यस दिस बिकम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं इफ यू पीपल कैन गिव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. एक टिपिकल CUET का क्वेश्चन कैसे होता है एंड स्टूडेंट जब तक हम आपको वापस से एक आध दिन में फिजिकली बुलाना स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक यू पीपल डू जॉइन अस लाइव. एंड जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड. अभी तक स्टूडेंट्स हमने जितनी भी लाइव सेशंस लिए थे मैक्सिमम वी हैव टेकन ऑन Icon Careers एप्लीकेशन. जस्ट ओके अ फ्यू सेशंस वी आर टेकिंग ऑन YouTube. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या लगता है? Any answer to this question? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स. स्पीड अप. ओके चलिए आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स नाउ. ओके Soham has given the answer. Fourth option. Okay चलिए so सारे स्टूडेंट्स let us see and the best part with match the following is even if you people are not able to give answers to all the sentences, all the questions, एक या दो भी अगर अपन ने मैच कर लिया तो भी स्टूडेंट्स द जॉब इज ओवर. चलिए अब अगर अपन कंपेयर करें. ओके कम ऑन बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव द आंसर. जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं पूरी क्लास को लाइव अटेंड करना. यू विल एंजॉय अ लॉट. चलो लेट मी गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन नाउ. नाउ सी आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी
Before leaving the room, she remembered to dash the air conditioner to keep it cool. इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एयर कंडीशनर को टर्न ऑन करेंगे. तो इसका मतलब है सी एंड टू का कॉम्बिनेशन. एंड इफ आई कंपेयर ऑल दी ऑप्शंस, सी टू का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स केवल एक ही जगह है, एंड दैट इज द फोर्थ ऑप्शन. So I think students, in case if you people are running short of time, okay, तो in that case directly हम fourth option को mark करके we can proceed. पर in case तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा और sure होना है, तो fourth option के सारे combinations को you people can go through once and after that you can decide. Okay. So anyway, despite searching for hours, she couldn't find her keys, but they eventually turned up in her jacket. अचानक से स्टूडेंट जब कोई चीज मिल जाती है तो उसको अपन कहते हैं turn up. And that is the reason A3, this combination is absolutely correct. Okay, जैसे for example कोई person भी आपसे मिलने आता है तो हम उसको कहते हैं turn up. He turned up, understand. Coming on the second one, the old factory was eventually dash a vibrant gallery, preserving its historical significance. इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमने ओल्ड फैक्ट्री को एक वाइब्रेंट आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया. तो इसको अपन क्या बोलेंगे, turned into, understand. So B4 this combination is correct. Hence the correct answer is fourth option. Indeed, जिन भी बच्चों के आंसर fourth options हैं, kudos to them. बहुत अच्छा. As a student, you people have to give the correct answer. Hold on. Now coming on to the second question. Yes. Come on. This becomes a question where you people have to find out which word will be suitable in which particular sentence. चलो, I have got the answers. Come on, सभी students. Speed up. जितने भी students live हैं, keep giving the answers now. Okay. Right. A few students have given the answer and they have given second option as the correct answer. चलिए कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, व्हिच इज द करेक्ट आंसर. आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, isn't it? अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यू पीपल डू अंडरस्टैंड बहुत टफ vocab भी नहीं है. The only point is we need to understand. The words are very simple. We need to see that कि कौन सा word कहाँ पर fit होगा. So you people do understand when we talk about IP math and CUET, not every time the questions are tough. A good number of questions are actually manageable, and only a few questions can be such जो थोड़े से tough हो. But students, वो जो few questions होते हैं, they themselves become the most decisive questions. Anyway, so which is the correct answer? The team will dash the results of the survey before presenting them. Okay, चलो मान लेते हैं नहीं पता चला. Leave it. It is difficult to dash the impact of the new policy on the economy. Okay, समझ में आया? Analyze करना, comprehend करना क्या possible है? But he was polite, never attempting to interrupt during the meeting. So one thing is very clear, students. C का जो combination होगा, that is interrupt. So he was polite, never attempting to interrupt during the meeting. And C2 का combination अगर मैं compare करूं, once again students, people see there is only one option. Hence मुझे लगता है कुछ और compare करने की जरूरत ही नहीं है. And anyway students, still in case if you people have got the time, आप करना चाहो तो you can. But anyway students, C2 का combination इतना strong है. I think there is no point wasting time, and the correct answer happens to be second option. Implement का मतलब हमको पता है execute करना, and moreover students comprehend. Comprehend का मतलब होता है to understand. So what is the meaning of comprehension? When we say reading comprehension, the comprehension का मतलब होता है to understand. अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना. If I ask a question to you, can you tell me if I give two spellings of analysis? One is this and the second spelling is SES. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों स्पेलिंग्स को अपन कंपेयर करें, which spelling of analysis is correct? SIS or SES? Yes, come on. Yes, come on.
question to you people is, which spelling of analysis is correct? Actually, you people do understand when I say analyze, this becomes a verb. But when I say analysis, this becomes a noun. But my question is, इन दोनों में से किसकी स्पेलिंग सही है? Okay, which is the correct spelling? Students minded, कई बार question papers में we people come across questions which are based on spellings also. So which is the right answer? Shall I give? Anyway, students, हो सकता है आपको लगे कि first is the correct answer because that is the most common spelling जो अपन बार-बार use करते हैं. But indeed, you people do understand both the spellings are correct. And what is the difference here? The difference is SIS, this becomes singular, and SES, this becomes plural. Understand? Sorry, students. SIS, this becomes singular, and SES, this becomes plural. So you people have to understand ये जो singular and plural में spelling का variant होता है, you need to understand that also. So students minded, ये जो छोटी-छोटी सी बातें हैं, they play the most important role in English. So when I talk about CUET, JIPMAT or NPAT, spellings per you people will definitely see some questions. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं students. Coming on the next question, your time starts now. Yes. Once again, this becomes a question based on phrasal verbs. Okay, and students, you people do understand, कम से कम 2 या 3 questions will be based on phrasal verbs. So it becomes important that you people should know the meanings of the various phrasal verbs. अच्छा, दिखने में सारे phrasal verbs बहुत simple होते हैं, get on, get at. But anyway, students, हर phrase का अपना एक unique meaning है. And that is the reason this becomes important. We need to understand each and every meaning of each and every phrasal verb. Which is the correct answer? I'm just waiting for your answer. All the students, come on, speed up. Yes, any answer? Okay, Soham has given the answer. Rest of the students, come on. Fantastic. Very nice. Soham, yes, your answer is absolutely correct. Keep it up. Fantastic. So students, if I compare all the options, I hope the inquiry will dash the truth. So definitely, I mean to say that in case if I do some inquiry, I will actually discover what is the truth, isn't it? So students, when we discover something, when we will actually find something, so इसे अपन कहते हैं get at. So here A2, this combination is perfect. Okay. And then coming on students, we could never dash on my salary alone. So I mean to say that कि मैं सिर्फ अपनी salary पर I cannot survive. So when I want to say that कि मैं अपनी salary पर survive नहीं कर सकता, only on my salary. The students यहाँ पर best answer होना चाहिए B4, get by on my salary alone. So get by का मतलब होता है survive करना, अपना काम चला लेना, understand. Then coming on the third one, however will we dash without you. तो यहाँ पर students, हम तुम्हारे बिना कैसे चल सकते हैं. तो students, get on का मतलब होता है to continue, to cope with. So to continue or to cope with. So C1, this combination is correct. And the way he spends, he can. So definitely students, the correct answer will be get through. तो यहाँ पर जो best answer होगा, that is third option. Indeed, जिन बच्चों ने correct answer दिया, kudos to them. Fantastic. Very nice. So these are the kind of questions which you people have to keep facing. And ये questions students बहुत ज़्यादा time consuming नहीं होते. But students, even if these questions are easy, don't be overconfident. कई बार students हमने देखा है जो accidents होते हैं वो अच्छी सड़कों पर होते हैं जब speed पूरी होती है. तो कई बार बहुत silly mistakes हम लोग commit करते हैं ऐसे बहुत simple questions में भी. So be careful in that. And every wrong answer is going to cost you a lot. Chale, coming on.
One more question which is based on phrasal verb. Come on, one more question based on phrasal verb. Your time starts now. जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, कीप गिविंग द आंसर। तो फटाफट स्टूडेंट्स आंसर्स देते रहो और जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना मजा आएगा। So what is the correct answer here? Now this question is not so tough. अभी just दो तीन questions पहले students we have discussed what is the meaning of turn up. So once you understand the meaning of turn up, I think making the combination becomes easy for us. And the best part happens to be जैसे मैं A लेता हूँ तो A के साथ चारों ऑप्शंस में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो इन केस इफ आई बिकम वेरी श्योर अबाउट A का कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा, आई थिंक गिविंग द करेक्ट आंसर becomes easy for us. Yes, I see so many students giving the answer. कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है और कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है। ओके ओके आनंद, डन डन डन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर हैपेंस टू बी चलाई, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। एंड व्हाई फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर, इसका सबसे बड़ा हिंट है स्टूडेंट्स, ओके, ए एंड टू का कॉम्बिनेशन। We were all surprised to see Rahul because we had not expected him to dash at the party. तो हमने नहीं सोचा था कि वो पार्टी में आएगा। मैंने जस्ट अभी बोला था ना, when a person comes, तो अपन क्या कहते हैं? Yes, turn up. Turn up का मतलब है he has come. तो anyway, students, A2 का combination absolutely correct है. Understand? So if the combination of A2 is correct, the only option left is the first option. Now coming on students B4. I'm really exhausted. I think I will. Okay, I will turn in. इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, turn in का मतलब होता है to take some rest. I am really exhausted. I think I will turn in. That means I will have to take some rest. Okay, do understand? C1, in spite of being so lucid. What is the meaning of lucid? Lucid का मतलब होता है clear होना, understand? Apparent होना, understand? Limpid, lucid, clear, इन सब के meanings almost one and the same है. So in spite of being so lucid, sometimes he feels to clearly get across his ideas. The students do understand, even if that person is very much clear, but still he fails to clearly dash his ideas. So get across का मतलब होता है students, this person is not able to communicate. ये सामने वाले को समझा नहीं पाता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है. So when this person is not able to communicate, तो यहाँ पर अपन कहते हैं get across. So anyway, students, C1 and you people, इन सब क्लासेस को जब आप अटेंड करो तो प्लीज इंश्योर दैट ये जितनी वर्ड्स अपन डिस्कस करते हैं, जितनी फ्रीजल वर्ब्स अपन डिस्कस करते हैं, डेवलप अ हैबिट ऑफ नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग. सो व्हेन आई से गेट अक्रॉस, इसका मतलब होता है टू कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड? ओके, yes, absolutely. All these questions which I'm taking here are very, very important and most expected questions for CUET, JIPMAT and NPAT. Last, students, any news of celebrities? Okay, gets around. Gets around का मतलब होता है spread हो जाना. Okay, तो celebrities की जो news होती है वो बहुत जल्दी से spread हो जाती है. That is the point. Anyway, students, the correct answer here is first option. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question. Yes, now this question is not so tough. Again, this becomes a question based on vocab. Chaliye, what's just the correct answer? Anyone? Come on, come on, come on, speed up. Give the answer now. It is dash for each citizen to pay income tax.
आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्लिगेटरी, एब्सोल्युटली, दिस बिकम्स एन ऑब्लिगेशन. तो इनकम टैक्स पे करना इज नॉट बेनिवोलेंस, इट इज एन ऑब्लिगेशन. So therefore, students, A4 का combination absolutely correct है. And here, students, this becomes the combination of A4. Now, coming on B3, he's so adamant that there is no point trying to convince him. अब students, what is the meaning of adamant? Adamant का मतलब क्या होता है? जिद्दी होना, stubborn होना, understand? Okay, stubborn, जिद्दी. And students, adamant के बहुत अच्छे synonyms और भी होते हैं. Can you people give a few synonyms of adamant? Yes, चलो लेते हैं. एक बहुत अच्छा सा वर्ड हो सकता है obstinate. One more word can be taken as obdurate. Obdurate. And students, a big-headed person, okay, can also be known as adamant. जिद्दी होना. और कोई पर्सन जब जिद्दी होता है तो इसको अपन और कहते हैं defiant. Defiant is a person who defies or who does not follow the orders given by his superior. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी में अगर कोई पर्सनल अपने सुपीरियर के ऑर्डर को मानने से मना करता है, इसको कहते हैं डिफाई करना. एंड दिस पर्सन विल बी नोन एज डिफायंट. ओके, एक और बहुत अच्छा सा वर्ड विच इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे लैंग्वेज, बट स्टूडेंट्स व्हेन आई टॉक अबाउट सीयूईटी ऑन एनी एग्जाम, तो वहां पर ये वर्ड आने के पूरे चांसेस हैं. स्टूडेंट्स, द वर्ड इज कंटुमेशियस. कंटुमेशियस का मतलब भी होता है जिद्दी होना, stubborn होना. Okay, so contumacious, obstinate, obdurate, stubborn, adamant, defiant, इन सब का मतलब students almost one and the same. And this person can also be called as rigid. This man is uncompromising. This man is inflexible. Understand? तो ऐसे बहुत सारे words possible हैं. Now coming on. This dash business house has built many schools and hospitals. अब स्टूडेंट जब कोई पर्सन चैरिटी करता है, कोई बिजनेस हाउस चैरिटी करता है, यू पीपल डू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनी. मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेस में पहले भी बोला है, पेनी कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब होता है स्टूडेंट समथिंग गुड, समथिंग माइल्ड. आपके बेनी का मतलब होता है जैसे बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी. उसी तरह से स्टूडेंट्स बेनीवोलेंट, उसी तरह से बेनीफैक्टर, उसी तरह से बेनिडिक्शन. और इन सब का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स किसी भी वर्ड के साथ अगर प्रीफिक्स माल आ जाए. ओके, but do understand, instead of saying benevolent, if I say malevolent, so it becomes the opposite. Malefactor, malediction, malpractices, malnutrition, malice. In some words में students, you people see the prefix is mal. और कहीं पर भी if the prefix is mal, so this becomes a negative word. Many times it happens like even if you people don't know what is the correct meaning of the word, even students हमें सिर्फ tone पता है तो भी काम हो जाता है. So it becomes important for us कि we need to understand what is the tone of the word. Okay, the students benevolent has a positive tone and इसका मतलब होता है charitable होना, इसका मतलब होता है generous होना, इसका मतलब होता है students philanthropist होना, और इसका मतलब होता है humanitarian होना. So what is the meaning of humanitarian? जो समाज सेवा करता है, चैरिटेबल होता है, तो ऐसे पर्सन को अपन कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन. ओके, डू अंडरस्टैंड. चलिए, एनी क्वेश्चन? ओके, so here students the correct answer happens to be first option. Absolutely, the first becomes the correct answer. A very simple question. चलिए, coming on students, one more question purely on the basis of vocab. And this time students जो words हैं वो comparatively काफी अच्छे words हैं. Come on, give the answer now. इसमें स्टूडेंट्स हमने ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स को कहीं ना कहीं डिस्कस किया. एंड द बेस्ट पार्ट हैपेंस टू बी किसी स्टूडेंट को अगर चारों वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता है, बट एटलीस्ट आई गेस वी पीपल हैव टेकन दिस वर्ड इन द क्लास मल्टीपल टाइम्स. bellicose. So what is the meaning of bellicose?
यस यस यस, वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। ये आदमी स्टूडेंट्स हमेशा लड़ने को तैयार होता है। आपके दिस मैन लव्स फाइटिंग, बात बात पर लड़ाई करना। And bellicose does not have a positive context. It actually has got a negative connotation. तो जो आदमी हमेशा लड़ाकू होता है, बात बात पर लड़ता रहता है, इसे स्टूडेंट्स अपन कहते हैं bellicose. Understand? I guess एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड होता है dyslexia. And what is the meaning of this? A learning disorder. So a learning disorder is known as dyslexia. Idiosyncrasy का मतलब होता है स्टूडेंट्स a particular, a very unique habit of a person. तो किसी भी पर्सन की जो यूनिक हैबिट होती है, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलीट? समथिंग व्हिच इज आउटडेटेड, समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ फैशन। So anyway, which is the correct answer? Yes, so we have taken the meanings now, and the correct answer is fourth option. Okay, now चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Now some idioms are given to us, and you people have to tell me what are the meanings of these idioms. या पर हमें वर्ब्स बताने हैं, अंडरस्टैंड। ओके, एनीवे हमें वर्ब्स नहीं बताने, ऊपर वाला टाइटल आप छोड़ दें। ओके, हमें स्टूडेंट्स नीचे का कॉम्बिनेशन बनाना है, बस दैट्स इट। So you people have to find out what are the various meanings of these idioms. Not a very tough question. और कम से कम कुछ idioms तो हमने हमेशा सुने होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोंट पुट all your eggs in one basket. A stitch in time saves nine. So these are the most common ones. एंड जो बाकी है स्टूडेंट्स, उन्हें भी थोड़ा सा गेस करोगे तो पॉसिबल है। तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, डोंट सरेंडर। आप हमेशा फाइट करने की कोशिश करो। तो ऐसा नहीं कि हमको जल्दी से सरेंडर करना है, अंडरस्टैंड? यस, हैव यू पीपल गिवन द आंसर्स? कम ऑन, लेट मी सी। ओके, चलो कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। Just hold on. I'll continue with the class. Yes. So what is the correct answer? Shall I give the answer now? Yes, fantastic. The correct answer happens to be third option. Okay, a droning man will catch at a straw. अब स्टूडेंट जब मैं कहता हूँ ड्रोनिंग मैन, वो कुछ भी करने की कोशिश करेगा। अच्छा, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रोनिंग एंड सिंकिंग। Students, it becomes a home assignment for you. You people have to find out the difference between drone and sink. मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट्स ऑफन कमिटिंग अ मिस्टेक हियर आल्सो, एंड यू पीपल डू अंडरस्टैंड। कई बार ये जो कंफ्यूजिंग प्लेस ऑफ वर्ड्स होते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। So be careful in that as well. Okay? The students, a drowning man will catch at a straw. इसका सीधा सा मतलब होता है when in trouble, find all possible means of escape. So the combination is A and 2, और A2 का combination students हमारा third option में है। तो indeed third option becomes the correct answer. So one thing you people notice, ऐसे जितनी भी match the following के questions हैं, एक भी combination if you people are able to get, okay, almost चारों options में से there is only one option जो उस combination को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक या maximum दो combinations अगर बन गए तो yes, your answer will be unique. The match the following students, ये tough नहीं होता है, ये manageable होता है, और इसका एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैच द फॉलोइंग।
Yes, yes, yes. Come on. यस, इस बार पॉसिबल है स्टूडेंट्स की हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं भी पता हो, बट दैट इज ओके। एक या दो भी पता है तो काम हो जाएगा। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कम ऑन। So one student has given the answer, third option. Come on, Bastar, the students. I guess इसमें सबसे इजी क्या है? अच्छा, you people do understand. देखो, pseudo, pseudo का बेसिक मतलब होता है false. ओके, निम का मतलब होता है नेम। ओके, अंडरस्टैंड। आप लोगों ने स्टूडेंट्स कई बार एक कॉन्सेप्ट सुना होगा पेन नेम का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑथर होता है, कोई एक्टर होता है, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स अपने ओरिजिनल नेम से नहीं लिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद वाज अ सूडोनिम। एक्चुअली उनका जो नाम है वो मुंशी प्रेमचंद नहीं था, अंडरस्टैंड। वो तो ब्रिटिशर्स ने उनको बैन कर दिया एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड राइटिंग इन द नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो पेन नेम होता है, ये जो फॉल्स नेम होता है, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं स्यूडोनिम। ओके, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या होगा? ए का कॉम्बिनेशन, फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस का मतलब क्या है? फॉल्स, अंडरस्टैंड। So if I take the combination of A4, now there are two options where I'm getting this combination. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हिच इज द करेक्ट आंसर? एंड यू पीपल सी, दोनों ही ऑप्शंस में D3 का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। So in case if you people don't know what is the meaning of paradigm, anyway students, it is loud and clear. Paradigm का मतलब होता है a model, example or pattern. Now what is the meaning of clairvoyance and intemperance? Understand. Immoderate indulgence of appetite. Intemperance का मतलब होता है स्टूडेंट्स when you are not able to control yourself. ओके, बहुत अनयूजुअल। आप एपेटाइट में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपसे रुका नहीं जाता है, आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। So when you don't have self restraint, so that is known as intemperance. And if I talk about clairvoyance, इसका मतलब होता है sagacity. And what is the meaning of sagacity? Your intelligence. So when I say clairvoyance, intuitive sagacity. Sagacity का मतलब होता है intelligence and smartness. So B1, this combination is correct. So anyway, students, the best answer happens to be first option. So yes, indeed, first option becomes the correct answer. Done? चलिए, one more question. Come on, give the answer to this question now. अभी स्टूडेंट्स एक दो दिनों में वी पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट टू आर न्यू प्रोमाइसेस। उसके बाद सारी क्लासेस अपनी वहीं पर होने वाली है। सो मीनवाइल वी आर जस्ट टेकिंग अ फ्यू ऑनलाइन सेशंस, ताकि जिन बच्चों के अभी एग्जाम्स हैं उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो एनीवे स्टूडेंट्स, इस पूरी पीपीटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि पूरा पीडीएफ आई विल बी शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ आइकन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आई वांट यू पीपल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, नाउ गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। At 11:15, you people are going to have a class on quant. Yes, come on. A person who withdraws from society to live a solitary life. एक ऐसा बंदा जो आइसोलेशन में रहना चाहता है, जो अलूफ रहना चाहता है। ओके, ये सबके साथ मिक्सअप नहीं होता, अंडरस्टैंड। तो अ पर्सन हु withdraws from society to live a solitary life, तो जब मिक्सअप नहीं होता है, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या होगा? recluse. So A3, this becomes the correct answer. A decision that cannot be changed. Irrevocable. रिवोक करना मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। रिवोक, रिपील, रेपुडिएट, ओके, इन सब का मतलब होता है कैंसिल करना। डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, इररिवोकेबल। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर एंड वायलेंस, so this person will be known as pacifist. And what do we call a person who is a warmonger?
उस आदमी को क्या कहते हैं जो हमेशा युद्ध करना चाहता है? उस आदमी को स्टूडेंट्स अपन क्या कहते हैं? हु इज अ वॉर मॉन्गर, वो हमेशा चाहता है कि युद्ध होता रहे, अंडरस्टैंड? ओके, एक तो है पैसिफिस्ट और इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, हु लव्स फाइटिंग, हु लव्स वॉर, इस पर्सन को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं जिंगोइस्ट। तो दिस पर्सन विल बी नोन एज जिंगोइस्ट। तो एक होता है पैसिफिस्ट और एक होता है जिंगोइस्ट, अंडरस्टैंड? And the situation in which no progress is possible, deadlock, okay, stand still, deadlock. अब समझ में नहीं आ रहा है कि what has to be done. So when we talk about America and Iran, there is a deadlock. Okay, Iran wants Hormuz पर control हो, America wants कि Iran Hormuz को control ना करे. So now this became a situation of deadlock, and what is going to happen, no one knows. Okay, understand? चलिए आगे बढ़ते हैं students. Coming on. Yes, the correct answer is first option. चलिए, one more question based on match the following. Yes, yes, yes. Come on, give the answer. चलिए, one student has given the answer. सोहम का आंसर आ गया. Second option. Raju. Just 1 second, students. Raju. पाँच मिनट में फोन वापस लगा. Yes. Shall I give the correct answer? Okay. Done. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पॉसिबल है जहां पर हो सकता है चारों वर्ड्स हमारे लिए नए हो. But anyway, students, in our classes we have taken this word rendezvous. So what is the meaning of rendezvous? This actually becomes a foreign word which is commonly used in English. And the pronunciation is rendezvous, understand. And rendezvous becomes a meeting place. A meeting place is known as rendezvous. So here, students, the correct answer is D2. And if I take D2, there is only one option. So A4, reprehension. इसका मतलब है किसी पर blame करना. B3 repartee, a ready with your apt reply is known as repartee. Repartee का मतलब होता है एक बहुत ही स्मार्ट सा रिप्लाई देना. And repository, a place where something is stored in large quantity. Okay, so students, the correct answer is second option. चलिए, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया. अब स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, बट एज यू पीपल नो दैट नए प्लेस पर शिफ्टिंग करनी है. एंड रिगार्डिंग दैट, ओके स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो आई विल हैव टू गो देयर. तो मैं आपकी क्लास को अभी फिलहाल यहीं पे एंड कर रहा हूँ. पर ये पूरा पीडीएफ आई एम पोस्टिंग इन द ग्रुप, और इसमें लगभग स्टूडेंट्स ऐसे 30-35 क्वेश्चंस हैं. आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना. एंड इन केस इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की, डू लेट मी नो ओवर व्हाट्सएप. तो मुझे स्टूडेंट्स कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप स्ट्रेट अवे व्हाट्सएप करें. आई विल रिप्लाई एंड आई विल टेल यू व्हिच इज द करेक्ट आंसर एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. एंड ऑल द स्टूडेंट्स जिन बच्चों के एग्जाम्स आ चुके हैं, यू पीपल हैव टू फोकस मोर ऑन टेस्टिंग. बेटा टेस्टिंग से बिल्कुल मत डरो, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना एडवांटेज मिलेगा. तो मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ कि उन्हें डर होता है कि सर नंबर्स कम आएंगे. बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि मॉक्स में नंबर कम आ जाए, ताकि एक्चुअल पेपर में नंबर्स बहुत अच्छे आ जाए. तो कम से कम मॉक्स में डरने की जरूरत नहीं है. दे आर नॉट मेंट टू स्कोर, बट दे आर मेंट टू प्रिपेयर. स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन पर, हमारी अभी तक की पूरी तैयारी पर जबरदस्त ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लेकर चलो. वी वाउच दैट CUET में, एनपैट में, जिपमैट में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे व्हिच वी हैव टेकन इन आवर क्लासेस. बस थोड़ा सा स्मार्ट रहो एंड रिवीजन करते रहो. ओके,
चलिए, तो by now students, I'm going to end your session now. ये पूरा PDF I'm just posting in the group, and you people have to solve rest of the questions. And the 10 questions which we have taken based on match the following, बिल्कुल वापस से रिवाइज करना. Phrasal verbs are important, vocab is important, and moreover students idioms and phrases. At the same time, basic grammar के rules and reading skills और थोड़ी सी practice, and you people will see how wonderful your results are going to be. Okay. Chaliye, so thank you very much for being with us, everyone.